Good morning, student. Myself Manoj Chotia from Raghunath Vidyalaya. We are studying body fluids and circulation. In this chapter, three topics are remaining. First of all, electrocardiography, ECG. Second, regulation of circulation, and third, disorder of circulation. So today we study all three topics. Starting from electrocardiograph, ECG. We are familiar with this scene from a typical hypothetical television show. Whenever we see a patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage trace on a screen and makes sound of pulp पी आप लोगों ने सुना होगा. एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट. दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG. The full form of ECG is electrocardiogram, and this electrocardiogram is obtained from electrocardiograph. The machine is called electrocardiograph, electrocardiogram, and the result is called electrocardiogram. So ECG is a graphical representation of electrical activity. ECG is a graphical representation of the electric activity of the heart during cardiac cycle. And you know what is cardiac cycle. To obtain a standard ECG, as shown in the figure, a patient is connected to the machine with electric leads, one to each wrist and to the left ankle, that continuously monitor of heart activity for a detailed evaluation of the heart's function. Multiple leads are attached to the chest region. Here we will take only about a standard ECG. Today, which we are studying, that is standard ECG. Each peak in ECG identified with the letter P. This is P. Each height of ECG is called P. अगर एक सीधी रेखा आ जाती है, आप लोगों को पता है, it means patient is died. So P wave represents an electric excitation or depolarization of the arteria, which leads to contraction of both arteries. The QRS is the highest range, or we can say the QRS is the complex represented the depolarization of the ventricle, which initiate the ventricle contraction. जैसे ventricle contraction होगा तो सबसे ज्यादा जो है वो ब्लड का फ्लो होगा किसमें, पल्मोनरी वेन में और आर्टरी में. ठीक है, जो संपूर्ण सारे बॉडी को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है. द T is represent the return of ventricle from excited to normal stage, or we can say repolarization. The end of the T wave marks at the end of systole. Obviously, by continuing the number of QRS complex that occur in the given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since ECG is obtained from different individuals have rough the same shape and given lead configuration, any deviation from the shape of this indicates a possible abnormality or disease. Hence, it is of great clinical significance. Now, our second topic is regulation of cardiac activity. Regulation of cardiac activity. Normally, activity of the heart are regulated intrinsically, because as we know, there is no any control of human mind or nervous system on the heart, and it is a myogenic, auto regulated by a specialized muscles nodal tissue. Hence the heart is called myogenic. A special neural central in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomous nervous system. Neural signals through the strength of
sympathetic nerve and can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricle contraction and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic neural signals describe the rate of heartbeat, speed of conduction of action of partially and thereby the cardiac output. So adrenal medulla hormones can also increase the cardiac output. So this is the regulation, means हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है, ठीक है, इसलिए इसका कंट्रोल जो है वो माइंड के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा नहीं होता. कुछ मात्रा में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसकी रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बाकी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. इसी प्रकार जैसे हार्मोन्स जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हार्ट बीट की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, कंट्रोल नहीं करते. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. Disorders of circulatory system. The first disorder of circulatory system is high blood pressure, or we can say hypertension. Hypertension is the term for blood pressure that is higher than normal. Normal blood pressure, you know, is about 120/80. 120/80. It is diastolic and systolic pressure. In measurement, 120 mmHg millimeter of mercury pressure is the systolic pressure, or pumping pressure, and 80 mmHg of the diastolic pressure or resting pressure. If repeated clocks of blood pressure of an individual is 140 to 90, 140/90, or it is less than 120, then लोअर ब्लड प्रेशर, बट नॉर्मल रेंज इज 120 to 80. जब ये बढ़ जाता है, हम 2-3 बार किसी इंडिविजुअल पर्सन का मेजरमेंट करते हैं, तो ये हर बार क्या होता है, 140 to 90 या 150 to 100 या 160 to 110 या यो कहें अपन, इंक्रीज ही होता जाता है. देन इट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. इट शोज हाइपर टेंशन. हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड kidney. Second disorder of circulatory system is CAD, coronary artery disease, and third is angina, and fourth is heart failure. First we study high blood pressure, second coronary artery disease. Coronary artery disease, often referred to as atherosclerosis, affect the vessels that supply blood to the heart muscle. हार्ट को काम करने के लिए जो वेन होती है, ठीक है ना, हार्ट को काम करने के लिए जो ब्लड सप्लाई होता है वो किससे होता है, कोरोनरी आर्टरी से होता है. यानी एरोटा से एक वेन निकलेगी, उस वेन को अपन, उस वेसल्स को क्या कहते हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी. अब उस कोरोनरी आर्टरी में कोई डिफेक्शन उत्पन्न हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज और सीएडी. इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है. इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन कोरोनरी आर्टरी विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो. और उससे क्या होगा, इनफ अमाउंट में ब्लड जो है वो हार्ट को नहीं मिल पाएगा और हार्ट अच्छे से काम नहीं कर सकेगा. थर्ड है angina. It is also called angina pectoris, a symptom acute chest pain. जब chest pain होने लगता है, appears when no enough oxygen is reaches to the heart. जब enough amount में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है हार्ट तक, तब chest pain होने लगता है. Angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle age and अर्लिडिटी. जो छोटे बच्चों में उनमें भी हो सकता है और मिडिल एज वाले में, वैसे सब में हो सकता है, लेकिन ये दो ज्यादा इफेक्टिव है. इट ऑकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो. ये ब्लड फ्लो के इफेक्ट को, ब्लड फ्लो के इफेक्ट से ये डिजीज होती है. और लास्ट है हार्ट फेल्योर. दो मेन ऑर्गन्स होते हैं अपने, हार्ट एंड माइंड. अगर माइंड फेल्योर हो जाए तो व्यक्ति फिर भी जीवित रह सकता है और उसको अपन कहते हैं क्या, कोमा में चला गया. लेकिन हार्ट अगर फेल्योर हो जाता है तब वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है ना. तो हार्ट फेल्योर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग. हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ब्लड को पंप करना. और जब ये ब्लड को पंप नहीं कर पाता है
blood effectively enough to meet the needs of body. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease. क्योंकि हार्ट से फिर लंग्स तक भी ब्लड नहीं जाएगा और लंग्स तक ब्लड नहीं जाएगा तो वो प्योर नहीं होगा. देन हार्ट फेल्योर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट दूसरा होता है व्हेन हार्ट स्टॉप्स. हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसको तो क्या कहते हैं, हार्ट स्टॉप. लेकिन फेल्योर मींस वो पंप नहीं कर पाता है इनफ अमाउंट में ब्लड को, तो हार्ट फेल्योर. हार्ट attack when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply. So these are the disorders of circulatory system: high blood pressure, CAD, coronary artery disease, angina and heart failure. And by these disorders this chapter is completed. Thank you for today's class.